In this video, I would like to teach you about tense. Tense has three forms: present, past and future. पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ. तो present tense की 4 अक़साम है. There are 4 forms of the present tense, और past tense की 4, plus future tense की 4. इस तरह सब मिला के 12 forms. आज वो 12 फॉर्म के मुख्तलिफ जुमले पढ़ने जा रहा हूँ. अब जुमले की मदद से समझिए कि किस तरह से सेटिंग बनती है. आप अपने जहन में सेटिंग बनाए. जिस तरह से मैं जुमले पढ़ रहा हूँ इसी तरह लिखा जाता है और इसी तरह बोला जाता है. इसमें वर्ड की मुख्तलिफ फॉर्म इस्तेमाल होती है. तो पहली चीज़ प्रेजेंट टेंस में आते हैं. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाइए. I speak English, you speak English, we speak English, they speak English, he speaks English, she speaks English, Ahmad speaks English, Ahmad and Fatma speak English. Present continuous में आइए. I am speaking English, you are speaking English, they are speaking English, he is speaking English, she is speaking English, Ahmad is speaking English, Ahmad and Akram are speaking English. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज का इस्तेमाल. आई अ वर्ड की थर्ड फॉर्म, हैव और हैज के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म. आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ही हैज स्पोकन इंग्लिश, शी हैज स्पोकन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इंग्लिश. अब आ जाइए चौथी फॉर्म प्रेजेंट टेंस की. कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हैव बीन के इस्तेमाल. आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव बीन, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, शी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, अहमद हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश. Okay, now the next past tense. Past tense, past indefinite. I spoke, you spoke, we spoke, they spoke. ठीक है. I spoke English, you spoke English, they spoke English, we spoke English, Ahmad spoke English, Ahmad and Akram spoke English. Past continuous. I was speaking English, you were speaking English, they were speaking English, we were speaking English. Ahmad and Akram were speaking English, right? Past continuous के बाद past perfect had word के third form के साथ आएगा. I had spoken English, you had spoken English, we had spoken English, Ahmad had spoken English, Fatma had spoken English. Past perfect continuous had been. याद रखिएगा. I had been speaking English, you had been speaking English, we had been speaking English, they had been speaking English. Come to future. Come to future tense. Future indefinite. I will speak English, you will speak English. I will speak, I shall speak. He will speak English, they will speak English, she will speak English, Ahmad will speak English. Right? Now, future continuous. I shall be speaking English, he will be speaking English, they will be speaking English, Ahmad will be speaking English. Ahmad will be speaking English. Now future perfect. I shall have spoken English, you will have spoken English, they will have spoken English, Ahmad will have spoken English. Will have spoken English.
Now, future continues. I will be speaking English, you will be speaking English, he will be speaking English, she will be speaking English. Or future perfect continuous. Future perfect continuous. I shall have been speaking English, you will have been speaking English, they will have been speaking English, Ahmad will have been speaking English. آج کا اتنا لیسن تھا. آپ نے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور پورا وقت دیا کریں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ایک جملہ اٹھا کر, کوئی بھی ایک جملہ آپ کے ذہن میں آتا ہو, آئی ایٹ مینگو, یو ایٹ مینگو, ہی ایٹس مینگو, شی ایٹس مینگو. اب مسلسل یہ 12 جملہ بنا لیں. اگر کامیابی ہو گئی تو آپ کا ٹینس سمجھ میں آ جائے. اگر میرا ویڈیو آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ ٹیچر کی حوصلہ افزائی کیجیے, اور پلیز سبسکرائب کیجیے, کامنٹ لکھیے, لائک کیجیے. اتنا تو کریں ٹیچر کے لیے. اوکے, گڈ بائے, اللہ حافظ, پھر ملیں گے انشاءاللہ.